Well, welcome students. This is my new video of class 5th and today's chapter is chapter 9 programming in Scratch. Okay, so we start chapter 9 programming in Scratch. Recalling Scratch basics. In your previous classes you have learned that Scratch is a very simple and easy to use programming language especially designed for the young children. Scratch is a visual programming language based on a drag and drop method of programming. In Scratch, the commands are given in the form of graphical blocks. We can drag and drop the requisite blocks from blocks palette onto the script area to create a script. So Scratch is a programming language very simple and easy through which we can design the some graphical image, some coding, some animations through this. Okay, so it is a program, and Scratch program is called a Scratch project, contains one or more scripts or blocks. This is the Scratch desktop window. Okay, and this is the script area, and this is the various types of blocks. The Scratch has graphical objects called sprite, and this is the cat sprite. Okay, that is a mascot of that Scratch mascot. This is a, by default it is a cat. Okay, you have to change it. If you want then you can change it. By default ये Scratch cat होता है जो इसका mascot है, और आप इसको बदल भी सकते हैं. हाँ ठीक है. अब इसमें हम लोग कैसे ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए स्टूडेंट्स सिस्टम में आपके स्क्रैच इंस्टॉल होना चाहिए. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ऑल प्रोग्राम्स एंड देन हियर इज अ स्क्रैच, गो ऑन ऑल प्रोग्राम and then here is a scratch. In this there is a desktop icon Scratch. You have to double click on it and the Scratch window will open. This is a Scratch window. Okay, programming in Scratch. So Scratch provides us code blocks to perform arithmetic calculations, compare two values, generate random numbers, concatenate words, find the length of word, use variables, and do many more things. Let us learn. So in this Scratch programming we can add, subtract, multiply, divide, compare two values whether they are greater than, less than, generate random numbers, concatenate means join two words. One word is Ramesh and another one word is Suresh, then we can join that two words and make Ramesh Suresh, whatever we want. Find the length of any word. Okay, they use variables and do many more things. So performing arithmetic calculations, we can perform arithmetic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. The blocks that help to perform arithmetic calculations are called arithmetic operator blocks. They are given in the operators category block. Okay, and the operators block can be placed in the value box to display the output in speech box on the stage. Arithmetic operators block are as follows. This is addition, subtraction, multiplication and division, and you have to apply that arithmetic operator blocks and do your calculation. How? I will show you. This is the operators. Okay, this is the operators category. Okay, this is the addition, subtraction, multiplication, division, random numbers, less than, greater than, most of the things operators blocks. Okay, so first we have to do the arithmetic calculations. Okay, how we can do arithmetic calculations? By default it's a new open. Okay, then if you want to add then you have to click. ओके, दैट ऐड ना इन इवेंट्स, ये हम यहाँ क्लिक कर लेंगे. फिर इवेंट्स में जाके पहले व्हेन क्लिक्ड, ये भी दिखा देना आपको, व्हेन क्लिक्ड, फिर से लुक्स कैटेगरी.
यहाँ नंबर्स लिख लिया, ठीक है। जो भी नंबर आपको ऐड करना है वो नंबर हम यहाँ लिख लेंगे। और लोग अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे रन करेगा ये। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, व्हेन क्लिक स्टार्ट, व्हाट इज़ द आंसर 119। क्या किया हमने, लुक्स के पहले इवेंट्स कैटेगरी में जाके व्हेन क्लिक किया, फिर ये से हेलो में ये एडिशन जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स में ऐड करना है। ऐड करने वाले मान लीजिए हमको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर से ये ले आएंगे से हेलो, ओके। और अगर सब्ट्रैक्ट करना है फिर ऑपरेटर्स, और यहाँ से वैल्यूज़ ले आया। जो भी वैल्यू आपको लिखनी है यहाँ पे राइट इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे वैल्यूज़ टाइप कर, मान लीजिए हमने लिखा 90 एंड देन 30, okay, and then you have to click on that green flag. Look, so what is the answer? Answer comes 60. So through this we can add, subtract, multiply or divide, okay. If you have to comparing two values, Scratch provide codes blocks relational operators blocks to compare two or more values. So that is a greater than, less than or equal to, and these the output of comparisons is shown in a true or false. जो output इसका आएगा वो true और false में हम values लिखेंगे, दो values। अगर ये greater होगा तो true return करेगा, अगर greater नहीं होगा तो false return करेगा। लेस देन है, इक्वल टू है, ये सारे फंक्शंस हैं। कैसे काम करेगा फिर से वही हम लोग करते हैं। पहले आप जाएंगे लुक्स कैटेगरी में, से हेलो सिंपल सा ले आएंगे यहाँ से। फिर हम लोग इस पे क्लिक, ऑपरेटर्स कैटेगरी में यहाँ पे ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू यहाँ ला। अब यहाँ दो वैल्यूज़ हम लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू यू हैव टू राइट, इफ आई राइट 85 एंड देन हियर आई हैव राइट 96, ओके। एंड नाउ answer is true, means 85 is greater than, 85 is less than 90 and 96 is greater and this is smaller, that is true, okay. If you change here, if I write here 815 and then you have to click, look answer is false, क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू चेंज कर दी है। 815 से ये ग्रेटर देन 96 बड़ा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ओके स्टूडेंट्स। Through this we can change the values, greater than, less than, that is a greater than, equal to. If you want to change equal to, then you have to events, looks category, equality check करनी, both numbers are equal or not, then you have to click here। दो नंबर बराबर है कि नहीं, मान लीजिए हमने 11 लिखा है यहाँ पे और यहाँ भी मैंने I have type 11, okay, and check both values are equal, then 11s are equal to 11, then true, answer is true, okay. If I type here another number 12, 120 and then we have to check, then answer will be false, okay students. So this is the comparing two values, greater than, less than or equal to. Generating two numbers, generating random numbers, or concatenating two words. So generating random numbers, we can generate, the operators category allows to generate random numbers between any two given numbers. Follow these steps. You have to click on that open operators category and drag and drop, get random 1 to 10. How? If you want to generate random numbers, then you have to click here and then click on operators category, and here look, pick random, look here, what is written here, pick random 1 to 10. here ये क्या करेगा, 1 से 10 के बीच में यहाँ लिखा है तो कोई भी एक नंबर ये जनरेट करेगा। कैसे करेगा, मैं उस पर क्लिक करते हैं, देखिए 7 इसने जनरेट कर दिया, फिर 10 कर दिया। रैंडमली ये कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है। अगर हम रेंज यहाँ बढ़ा दें या कम कर दें, इफ़ आई हैव टाइप हियर 21 एंड हियर आई हैव राइट 50, ओके। तो 21 से 50 के बीच में नंबर्स जनरेट करने हैं। एनी रैंडमली नंबर, कोई भी अपने मन से जो भी रैंडम नंबर्स, एनी रैंडम नंबर इज जनरेटेड थ्रू द ऑपरेटर्स कैटेगरी ब्लॉक इज द पिक रैंडम नंबर, ओके। एंड देयर इज अ टू वे, दो नंबर यहाँ फर्स्ट और सेकंड रेंज देंगे, इसके बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जब हम इस ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे, ओके। सो लुक हियर, okay. Now concatenating two words, concatenating means joining two words. One word is, if one word is Ramesh and one word is Suresh, then we can join Ramesh Suresh. One word is Ram and second one is Rahim, then we can join Ram Rahim, okay. So the
the join blocks in the operators category is used to concatenate or join two words. मतलब दो words को मिला के एक नया word बनाना. Okay, follow these steps. Click on the operators category and drag and drop block on the scripts area. Type two words that you want to concatenate and display them as a single word. Drag and drop block and place the join block in the value box as shown, and then click on this. When clicked on the script and run the script to see the output. So how? I will show you join. Okay, here is a join. First you have to click on that looks, then say hello, come here, okay, and then you have to click on that operators and then join. यहाँ रख देंगे हम लोग. अब यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ड. तो ये दो वर्ड को ज्वाइन करके आपको देगा कैसे. लुक हियर, क्लिक व्हेन अप क्लिक, look, hello word. First word is hello and second word is word. Okay, then hello word is came. If I write here any other, type any other, computer class, computer class. I type one word is computer and second word is क्लास. मैंने दो वर्ड चेंज कर दिया. अब फिर से हम लोग इस पर क्लिक करते हैं ग्रीन फ्लैग पे. लुक हियर, द आउटपुट इज कंप्यूटर क्लास. सो दिस इज द concatenation, joining two words. So if you want to concatenate two words, then we use the join block, in which there is a two space. First space is for first word and this is the second word. You have to type that two words and then output will came. Okay students, if you want to click, look here. Okay students, so that is for today's. Okay, thank you, have a nice day.